we have already done till exercise 3.3. Okay, so today we shall be doing from exercise 3.4. Okay, so 3.4 may we have two kinds of questions to find solution. Solution दो तरह के, principal solution and general solution. ठीक है, तो Yes, एक sir. बारी रिमाइंड करा देता हूँ व्हाट जो फॉर्मूले जो आइडेंटिटीज यूज होंगे उसको रिमाइंड करा देता हूँ. सो वी हैव sin x equals to 0, then x equals to n pi and belongs to z. If we have cos x equals to 0, then we have x equals to 2n pi, okay, 2n plus 1 pi by 2 actually. Odd multiple of pi by 2. 2n plus 1 pi over 2 and belongs to z once again. And 10x equals to 0. 10x 0, which implies x equals to n pi and belongs to z. Okay. So these are the some general solution when sin x, cos x, and tan x equals to 0. Okay, and general solution when sin x is not equal to 0, rather it is any other angle like sin alpha. अगर है sin x equals to sin alpha, then we have x equals to n pi plus minus 1 की power n alpha. Right? N belongs to z. Okay, and if we have cos x equals to cos alpha, then we have x equals to 2n pi plus minus alpha. Again we have n belongs to z. And 10x equals to 10 alpha implies x equals to n pi plus minus alpha. Okay, again n belongs to z. So these are the formulae or identity that will be used to find general solution of the trigonometric equations. Okay, so coming to exercise 3.4. यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चे? Sir, okay. So trigonometric functions exercise 3.4. Find the principal and general solution of the following equations. Right? पहला क्वेश्चन लेते हैं. Question number 1. We have 10x equals to root 3. Okay. So root 3 10 की कौन सी वैल्यू पर होता है? pi by 3 पर आता है. Right? So we Yes, sir. take 10x equals to 10 pi by 3, and from here we have x equals to, okay, principal solution. So principal solution we have to look for other solution as well from 0 to 2 pi. In one revolution we find the principal solution. Okay, so in first quadrant and third quadrant 10 has positive values. Okay, so 10 pi by 3 पर root 3 होगा और किस पर होगा? 10 pi plus pi by 3 पर होगा. Right? 10 pi plus pi by 3 पर भी पॉजिटिव वैल्यू होता है. So we have 10 pi plus pi upon 3, which is 4 pi upon 3. So we have principal solution x equals to pi upon 3 and pi plus pi by 3 is 4 pi by 3.
So this is the principal solution. Okay. Now general solution. For general solution, we have this is principal solution. Now coming to general solution. General solution. For general solution, we have 10x equals to 10 pi by 3. The smallest value that we take from principal solution. Okay. And x equals to n pi plus pi by 3 and belongs to z. So this will be the general solution. Okay. Let us take one more question, question number 4 from this exercise. Question number 4. We have cosec x equals to -2. So we have basically sin x equals to -1/2. For principal solution, we look for the values where sin has negative values, -1/2. तो नेगेटिव कहाँ पर होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो साइन दिस विल बी साइन पाई प्लस पाई अपॉन 6 1/2 वैल्यूज पाई/6 पर आता है, तो पाई/6 लेना है, पाई प्लस पाई/6 and another value is 2 pi minus pi/6. 2 pi minus pi/6. So another value where sine has a negative value is sine 2 pi minus pi/6. Okay. So we have x equals to sine pi plus pi/6, that is 7 pi/6, and another value is 2 pi minus pi/6, which comes to 11 pi/6. Okay, so this is the principal solution. Now coming to general solution. So once we have found the principal solution, it's quite easy to find the general solution of the given trigonometric equation. So we have sin x equals to -1/2. That means sin x to sin 7 pi/6. We take the smallest value from the principal solution. Okay. So Yes, sir. here it is x equals to n pi plus minus 1 to the power n 7 pi upon 6. Okay. And n belongs to integer. So this will be the general solution, right? Yes, sir. We have question number 5 now. Question number 5. We have been given cos 4x equals to cos 2x. Okay. So if we bring these two terms together, we have cos 4x minus cos 2x equals to 0. And cos c minus cos d, if we use the identity cos c minus cos d, that is -2 -2 sin c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2 equals to 0. Okay. So Yes, sir. this will become sin 6x upon 2 is sin 3x, and sin 2x upon 2 is sin x equals to 0. So which implies sin 3x equals to 0 or sin x equals to sin x equals to 0. Okay. And which gives us, if sin 3x equals to 0, obviously then 3x equals to n pi, and from here x equals to n pi. So from this value we have x equals to n pi over 3, and from here x equals to n pi
and n belongs to Z. So this is the answer. Okay. Okay, sir. तो एक बारी फिर से बताता हूँ क्या करते हैं हम। जब दोनों तरफ अगर टर्म्स दिया हुआ हो तो और साइन कॉस दोनों में से कोई एक ही हो, अलग अलग ना, ठीक है। साइन कॉस टेन मतलब Yes, जो sir. भी हो वो एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, तो एक तरफ ला करके फिर हम उस आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, देन इक्वेट कर लेते हैं जीरो से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर Okay, sir. 6 बता रहा हूँ। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 है आपका cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले देखना है जो एंगल्स है उसमें हम अगर आइडेंटिटी यूज करते हैं तो आइडेंटिटी यूज होने के बाद कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी यूज करते हैं, we get 2 cos c plus d by 2 which comes to 3x plus x by 2 2x. So obviously cos 2x will be common, so we can use that identity. अगर Okay, sir. रीअरेंज करने की जरूरत पड़ती है तो रीअरेंज करेंगे। सो वी हैव 2 cos 3x plus x by 2 3x plus x by 2 and cos 3x minus x by 2 and minus cos 2x equal to, and this implies 2 cos 3x plus x is 4x actually, 3x plus x 4x by 2 2x and cos x minus cos 2x equals to 0, and which implies cos 2x can be taken common together, common from these two terms, and we have 2 cos x minus 1 equals to 0, and this implies cos 2x equals to 0 or 2 cos x minus 1 equals to 0, and this implies 2x equals to 2n plus 1 pi by 2, odd multiple of pi by 2 पर cos की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने लिया है odd multiple of pi by 2, and from here we have cos x equals to 1 by 2 which implies x equals to 2n pi plus minus pi by 3, okay, and from here we have x equals to 2n plus 1 pi upon 4, and in both cases n is an integer, so this will be the answer. तो इसके दो आंसर हुए, एक आंसर नहीं हुआ, कौन कौन से, एक तो ये हुआ आपका और ये दोनों आंसर, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, sin x plus sin 3x plus sin 3x plus sin 5x equals to 0. Okay. So again, what we do regrouping such that we get the common in the terms. Okay. So we take these two together. So we have sin x plus sin 5x plus sin 3x equals to 0. Now, using identities, 2 sin x plus 5x by 2 cos x minus 5x by 2 plus sin 3x equals
to 0. So we have 2 sin 3x and cos 4x upon 2 is 2x. यहाँ पर ध्यान रखना है कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर cos 2x डायरेक्टली लिखा है। एक्चुअल में वैल्यू क्या आ रही है? cos माइनस 2x। cos को साइन में माइनस एंगल अगर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से sin 3x कमन लेंगे अब हम, ठीक है। सो sin 3x कमन है, कमन ले लो। sin 3x 2 cos 2x plus 1 equals to 0. Now from here we have sin 3x equals to 0 or 2 cos 2x plus 1 equals to 0. So here, from here we have sin 3x equals to n pi. From here x equals to n pi upon 3. From here cos 2x equals to negative 1 by 2, which is cos 2 pi by 3. So 2x equals to 2n pi plus minus 2 pi by. So x equals to n pi plus minus pi by 3. So these two are the answers. N belongs to Z and n belongs to Z. So these two are the answers. Okay, sir. Now we shall do miscellaneous exercise. Chapter 3. Class 11. So first question, 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equals to 0. So दो तरीके से काम कर सकते हैं। 2 cos a cos b की फॉर्म में ये है, तो इसको आप cos a plus b plus cos a minus b लिख करके तब कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों को cos a plus cos b के फॉर्म में कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 cos a cos b की आइडेंटिटी है, तो LHS इक्वल्स टू इसको 2 cos a cos b को cos a plus b plus cos a minus b plus cos a minus b, ठीक है। और इधर लिख लो आपका जो रह गया टर्म cos 3 by 13 plus cos 5 pi by 13 लिख लिया आपने, एंड देन ये आपका cos 10 pi by 13 10 pi upon 13 and plus cos pi minus 9 pi minus 8 pi by 13. तो cos minus theta cos theta होता है, इसलिए आप इसको लिख सकते हो cos 8 pi by 13 plus
pi by 13 plus cos 5 pi by 13 cos pi minus 10 pi by 13 pi minus pi by 13 13 pi minus 3 pi by 13 pi minus 3 pi by 13 ले लो pi minus 3 pi upon 13 तो इसको सॉल्व करेंगे तो we get 10 pi by 13 13 pi minus 3 pi is 10 pi plus cos pi minus 5 pi by 13 जो रेस्ट ऑफ द टर्म रह गए उसको लिख लो cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 and from here we have cos pi minus theta is minus cos theta ध्यान रखना यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं क्या यूजिंग cos pi minus theta to minus cos theta ये होता है ठीक है तो इसको यूज करेंगे cos pi minus theta minus cos 3 pi by 13 प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस cos 5 pi by 13 and cos 3 pi by 13 cos 5 pi by 13 देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस है so we get क्वेश्चन नंबर 3 4 में से 4 बता रहा हूँ या 3 बता रहा हूँ क्वेश्चन 3 4 एक जैसे ही है तो 4 बताता हूँ cos x minus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square equals to 4 sin square x minus y upon 2 x minus y upon LHS minus 2 आइडेंटिटी यूज कर लो sin c minus sin d cos c minus cos d का minus 2 sin c plus d by 2 so this will be minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2 whole square plus again we have sin x minus sin y whole square तो again sin c minus sin d की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 whole square ये LHS हो गया आपका this is LHS now minus 2 square is 4 so this will be 4 sin square x plus y by 2 sin square x minus y by 2 plus 4 cos square x plus y by 2 sin square x minus y by 2 4 sin square x minus y by 2 दोनों टर्म में कॉमन है
So we are taking common 4 sine square x minus y upon 2. From here we have sine square x plus y by 2 plus cos square x plus y upon. So this is 4 sine square x minus y by 2 into 1. Sine square a plus sine cos square a 1. So this is 4 sine square x minus y by 2. ये प्रूव करना था. This is RHS. फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना हो पाए. साइन एक्स और साइन 5x को हिंट दे देता हूँ so that we do not have any problem to do that. इसको करने में प्रॉब्लम ना हो आपको. इसमें साइन एक्स और साइन 5x को एक साथ ले लो एंड प्लस साइन 3x और साइन 7x को एक साथ ले लो. ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 5x प्लस x बाई 2 करोगे आप तो 3x बनता है. ठीक है, और कमन भी आना चाहिए ना. 5 प्लस 1 बाई 2 3 बनता है और इधर 7 प्लस 3 बाई 5 माइनस 1 बाई 2 जो भी है इन दोनों को एक साथ करके फिर या नहीं तो कर लो इसको. LHS इक्वल्स टू 2 साइन 6x बाई 2 3x cos 5x minus x 4x by 2 cos 2x plus 2 sin 10x by 2 5x and 7 minus 3 4 by 2 2x. इसलिए हमने लिया था क्योंकि यहाँ तो कमन आ गया cos 2x. 2 cos 2x कमन आ गया हमारा, कमन ले लो. तो दिस इज 2 cos 2x and sin 3x plus sin 5x. अब इनमें से आप आइडेंटिटी इनमें लगा दो. 2 cos 2x 2 sin 6x by 2 that is 3x and cos 5x minus x 4x by 2 cos 2x. so रीअरेंज करके लिख लो इनको. यही करना था आई थिंक. तो 4 cos ये हो गया आपका 2 2 जा 4 cos x. यहाँ पर कुछ गलत हुआ है आपका 5x minus x 4x by 2 cos 2x. sin x plus 5x था आपका sin 5x 2 sin 5x plus x by 2 3x 5x minus x by 2 cos 2x 7 plus 3 यहाँ पर गलत हुआ है. 7 minus 3 4 by 2 नहीं सही है. 2 cos 2x तो sin 3 यहाँ गलत लिखा, ध्यान रखिए. sin 3x था ना, sin 3x हुआ. sin 3x था ये. यहाँ से कमन क्या कमन निकाला 2 cos 2x तो sin 3x रह गया. sin 3x plus sin 5x so 2 sin 3x plus 5x 8x by 2 that will be 4x sin 4x and 5 minus 3 2 by 2 cos x. So here it will be cos x. Okay, अब rearrange कर लो इसको. So we have 4 cos x cos 2x and sin 4x. RHS and
Question number 7. Sine 3x plus sine 2x minus sine x equals to 4 sine x cos x by 2 cos 3x by 2. So taking LHS equals to, take these two terms together. So sine 3x minus sine x can be taken together plus sine 2x. So what we do, 2 sine c minus sine d is cos c, 2 cos c plus d by 2 sine c minus d by 2. 2 cos c plus d upon 2 sine c minus d upon 2. And here it is 2 sine x cos x. Sine 2x can be written as 2 sine x cos x. So from here, 2 cos 4x by 2 is cos 2x. 3x minus x, 2x by 2 sine x. And plus 2 sine x into cos x. 2 sine x is common. 2 sine x taken common, and cos 2x plus cos x. Now, using identity once again, we have 2 sine x and into 2 cos c plus cos c plus d by 2. This will be 2x plus x by 2 dx by 2 into cos 2x minus x by 2, that will be x by 2. So we have 4 sine x cos 3x by 2 cos x by 2. What we needed to prove? Yes, we have to prove this only. So this is RHS and hence proved. Now 8, 9, 10. These 3 questions are again important, right? We will do question number 8 and 10. Question 8. 10x equals to minus 4 by 3 and x in quadrant 2. To find sine x by 2 comma cos x by 2 and 10x by 2. So we have to find these 3 values, 3 trigonometric values. So x equals to negative 4 upon 3. So starting from the identity sec square x equals to 1 plus 10 square x. This identity से शुरू करना. So this becomes sec square x equals to 1 plus negative 4 by 3 whole square, which implies 1 plus 16 by 9, which implies 25 by 9. And further, sec square x equals to 25 by 9. And cos square x equals to 9 by 25. Cos x. See, x lies in second quadrant, and we know that
cos is negative in second quadrant. Add sugar to coffee. In second quadrant, only sine and cosec are positive, rest are negative. So cos x is negative, negative 3 upon 5. Now, cos x is what? 1 minus 2 sine square x by 2. Now, the question is why this identity has to be used? Because we need to find half angle. So we have to use half angle formula. Cos x equals to 1 minus 2 sine square x by 2. This is the identity that we are using. And my negative 3 upon 5. So taking 2 sine square x by 2 equals to 1 minus comes to other side plus 3 upon 5. Okay, so this will be actually 8 upon 5, and 2 can be sent other side. So this will be sine square x by 2 equals to 4 by 5, and sine x by 2 equals to 2 upon root 5. यहाँ पर समझना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x है तो उसका हाफ एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, सो साइन पॉजिटिव रखना है. 2 अपॉन रूट 5, इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 2 रूट 5 अपॉन 5. ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट हाफ एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू होगा. Now again we have cos x by 2 equals to root over 1 minus sine square x by 2. So this is root over 1 minus sine x by 2 is 2 root 5 by 5. Sine square x by 2 is 4 by 5 actually. So this is 4 by 5. 5 minus 4, 1 by 5. So cos x by 2 is actually 1 by root 5, which comes to root 5 upon 5. Now tan x by 2. समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir. Sin x by 2, cos x by 2. तो डिवाइड करेंगे तो आपका क्या था 2 रूट 5 अपॉन 5. 5 तो वैसे ही कैंसिल हो गया आपका. तो दिस विल बी 2 रूट 5 अपॉन 5 अपॉन रूट 5 अपॉन 5. ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल. आंसर यहाँ से 2 आएगा. सो tan x by 2 इज 2. सारे पॉजिटिव होंगे क्योंकि हाफ एंगल ले रहे हैं. तो हाफ एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में x है, तो हाफ एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहां सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. sin x equals to 1 upon 4. X in quadrant 2, once again x in quadrant 2. So find cos x first. Cos x is root over 1 minus sine square x. So this will be cos x equals to root over 1 minus 1 by 4 square, which is 1 minus 1 by 16, 16 by 16 root. So this will be
cos x equals to root over 15 upon 4. In second quadrant, so this is negative. Negative. Now, using half angle formula for cos x, so we have cos x equals to 1 minus 2 sine square x by 2 equals to negative 15 by 4. So 1 plus root 15 by 4 equals to 2 sine square x by 2. Getting sine x by 2 from there, sine square x by 2. So 4 plus root 15 upon 4 into 2 equals to sine square x by 2. Sine x by 2, sine x by 2 equals to root over 4 plus root 15 upon 8. And cos x by 2. For cos x by 2, we again use identity. Cos x was what? Minus root 15 upon 4. Minus root 15 upon, and cos x is what? 2 cos square x by 2 minus 1. Actually, cos square x by 2 is 1 plus cos x upon 2. This is the identity. So we have cos square x by 2 equals to 1 minus root 15 by 4 by 2. 1 minus root 15 upon 4 by 2. So this will be 4 minus root 15 upon 8. So cos x by 2 root over 4 minus root 15 upon 8. Okay. No negative values because all the values will lie in the first quadrant only. And 10x by 2 equals to sin x by 2 upon cos x by 2. So sin x by 2 is what? 4 plus root 15 by 8. So this is 4 plus root 15 upon 8 divided by 4 minus root 15 upon 8. 4 minus root 15 upon 8. Okay. So root 8 got cancelled. 4 plus root 15 upon 4 minus root 15. This will be the answer. We can rationalize it. We can do much over here. This will be actually 4 plus root 15 upon 16 minus 15, 1. So this will be the answer, 10x by 2. Okay. In answer 10, the values might differ over here. If 2 root 2 root 8 is rationalized, अगर इसको rationalize करेंगे तो इसका जो है आंसर डिफर करेगा और